So today we are starting this Thinking Thursday session with Bhagavad Gita. जैसे कि पहले भी 3-4 सेशंस भगवद गीता के हो चुके हैं, तो आज मैं और तृप्ति मैम हम लोग फिर सेशन लेके आए हैं और चैप्टर 4 पे हम बोलने वाले हैं। तृप्ति मैम आप कुछ बोलिए। बस यही है कि आज चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे and let it be more where you ask us questions and we also reply. और शकुंतला जी जो है वो she's going to take certain verses और मैं भी थोड़े से verses लेने वाली हूँ। इस तरह से हम सेशन करेंगे आज। शकुंतला आप स्टार्ट करेंगे? Yes ma'am. So normally we can call Bhagavad Gita as our life manual. So we are starting with chapter 4. Already कुछ श्लोक हम पहले चैप्टर 4 के कर चुके हैं। कल बहुत ही शुभ दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन था। पूरा का पूरा व्हाट्सएप, पूरा का पूरा सोशल मीडिया गुरु पूर्णिमा से भरा हुआ था। एंड लकीली आज जो श्लोक हमने चूज करे हैं, जो फर्स्ट श्लोक मैंने चूज किया है, वो गुरु के बारे में ही बोलता है। सो दिस इज चैप्टर 4 और उसका श्लोक नंबर है 34, वर्स 34। नाउ इसमें न केवल गुरु के बारे में बताया गया है, इनफैक्ट इनसाइट्स में इसमें जो ट्रू क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस एक डिसाइपल को पूछने चाहिए, वो भी दिया हुआ है। तो not only it speaks about guru, it also tells you about the true questions. Okay, so let us first have a look on the verse 34 of chapter 4. Okay, just it's हिंदी में मैं एक बार बोल के फिर मैं आगे चलती हूँ। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं उस ज्ञान को, एक्चुअली चैप्टर 4 इज ऑफ ज्ञान योग। पूरा का पूरा इस चैप्टर का नाम ही ज्ञान योग है। ज्ञान मीन्स विजडम। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। ये तत्वदर्शी ज्ञानी कौन है? यही गुरु है, ट्रू सॉर्ट ऑफ गुरु। उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करके, मतलब उनके लिए आपके पास एनफ ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो क्वेश्चंस पूछते हो वो एकदम एंड क्वेश्चन दैम विद एन ओपन एंड गाइडलेस हार्ट। बिल्कुल निष्कपट आपका हार्ट होना चाहिए। सो इस तरीके से ये जो वर्स है न केवल ये बताएगा कि गुरु बल्कि शिष्य को भी, डिसाइपल को भी किस तरह से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अभी इसी श्लोक में इसका जो कमेंट्री किया है परमहंस योगानंदा ने, बहुत ही खूबसूरत किया है। उसका क्या मीनिंग निकलता है? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है गुरु को लेके। आजकल एक तरह से एक फैशन टर्म बन चुका है गुरु। इसको लोग बाग काफी फैशन के वे में भी यूज करते हैं, या कुछ लोग बड़े दुखी रहते हैं हमारे पास गुरु नहीं है, ये वो नहीं। पहले इस चीज को आपको समझना होगा। When a devotee's prayers touch the supreme being, he sends him a guru through whose agency he draws the seeker to himself. यह हमारी चिंता करने का विषय ही नहीं है कि हमारे पास गुरु है या नहीं है, या हमें गुरु ढूंढना है। हमारे मन में एक जेन्युइन इच्छा होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, अभी इसको और देखते हैं। देन द सेम थिंग आई विल बी रिपीटिंग इन हिंदी इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो। इट इज गॉड हु स्पीक्स थ्रू द गुरुज वॉइस
and guides the devotee through his spiritual perceptions. कोई भगवान ही है, वो ही सब ये कर रहे हैं और वो ही गुरु के मुंह से खुद ही अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं. तैयार हमें होना. I'll repeat this in हिंदी. जब एक भक्त की प्रार्थना है, बिकॉज आई एम गुड इन हिंदी, सो जब एक भक्त की प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंचती है, ठीक है, जब भी आप तैयार हो, आपकी ट्रू प्रेयर्स भगवान तक जा रही हैं, तो वे उसके पास एक गुरु को भेजते हैं. अपने आप भगवान भेजेंगे आपके पास गुरु को, जिसके माध्यम से वे साधक को स्वयं तक आकर्षित करते हैं. ये भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है. भगवान ही आपको, एक भक्त को, जो ट्रू भक्त है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो एक बड़ा ही मिथ है, कंफ्यूजन है कि हमें गुरु नहीं मिल रहा. अभी इस पे और आती हूँ मैं. अभी जो लोग बोलते हैं, जिनके मैं हम सुनने में जो बातें आती हैं, बट थोड़ा सा और देख लेते हैं. ये ईश्वर ही है. दिस इज, it is God who speaks through the Guru's voice and guides the devotee through his spiritual perceptions. Okay, so ये ईश्वर ही है जो गुरु की वाणी के माध्यम से बोलते हैं और भक्त की दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करते हैं. खुद भगवान ही बोल रहे हैं. सो किस तरीके से बोलते हैं आजकल? देखिए, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है. कोई लोग से हमने सुना है, वो बोलेंगे हमको तो कोई लाहिड़ी मास्टर जैसा गुरु मिल जाए. सबने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रखी है. कोई बोलेगा मुझे युक्तेश्वर जी जैसा गुरु मिल जाए. कोई सीधे बोलेगा मुझे महाअवतार बाबा जी जैसा गुरु मिल जाए. वो मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या आप रेडी हैं? क्या आपने ट्रू, ये जो, क्या आपने एक ट्रू अपनी प्रेयर्स भगवान तक पहुंचाई है? क्या आपकी इंट्यूशंस प्योर हैं? क्या आपके इंटेंशंस प्योर हैं? तो आपको मिलेगा. फिर ये आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, ये भगवान की अपनी प्रॉब्लम है, उनका अपना इशू है, और वो अपने आप तक पहुंचाएंगे. 3 ways ऑफ ट्यूनिंग इन विद द गुरु. गुरु के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसे होगी? उसके लिए 3 अलग अलग तरीके. नंबर 1, बाय सेल्फ सरेंडर. जब एक बहुत ही सेल्फ रियलाइज्ड गुरु हमको मिलता है, तब अगर हम उनके सामने एकदम सेल्फ सरेंडर करते हैं, एकदम निशर्त भक्ति करते हैं, मतलब कि कोई अनकंडीशनल डिवोशन होना चाहिए अपने गुरु के लिए, तब आपको ऑटोमेटिकली उसके ज्ञान से अपने आप आपको ज्ञान मिल जाएगा. इट इज नॉट लाइक दिस कि हम शो ऑफ करने के लिए गुरु बना रहे हैं. आपका कप एम्प्टी होना चाहिए. वो एम्प्टी है तो अपने आप से आप सेल्फ सरेंडर होंगे और आपको गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा और उससे ज्ञान भी मिलेगा. सेकेंड इज बाय इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मीनिंग क्या है हिंदी में हम समझे तो, श्रद्धा पूर्वक बौद्धिक प्रश्न. कई बार मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स में, ऑनलाइन मीटिंग्स में मैंने देखा है कि लोग कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. कभी कभी लोग सिर्फ सीकिंग अटेंशन के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. दे जस्ट शो, देखो हमें ये एंड समटाइम्स वो सिर्फ गुरु का टेस्ट, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं. दैट इज नॉट द वे a disciple should ask question to the guru. एक हमें अच्छा गुरु चाहिए तो उससे पहले एक हमें अच्छा डिसाइपल बनना भी जरूरी है. एंड देन द थर्ड, ये दैट इज बाय सर्विस. ये पुराने टाइम में होती थी, अभी भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत ही एनलाइटन गुरु होना चाहिए. ट्रूली एनलाइटन गुरु. वो ज्यादा लाइमलाइट में आते ही नहीं है, आप जानते भी नहीं है उन गुरुज को. और उन ऐसे गुरु के सिर्फ उनके साथ रह के उनकी सेवा करने से ही मिल जाएगा. बिकॉज यहाँ पे जैसा कि परमहंस योगानंद जी और युक्तेश्वर गिरी जी के बीच में भी होता था, यहाँ पे साइलेंट कम्युनिकेशन होता है. मौन विचार चलते, एक के माइंड में क्या चल रहा है दूसरा कैच कर लेता है. दैट सॉर्ट ऑफ, ये बहुत ही हाई लेवल का कनेक्शन होता है.
So this is something all what I can say about guru is. आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, मगर बिफोर दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दिस थिंग कि आजकल क्या है, आपको एक गुरु, कई बार जब सुनने को मिलता है कि हमको ये गुरु नहीं मिल रहा है या हमको वैसा गुरु चाहिए जो हमको एनलाइटन कर दे, ये सब तो ठीक है। आपके लिए एक अप्रोप्रिएट गुरु इज ऑलरेडी असाइन टू यू। गॉड ने अपने आप किया हुआ है, और आप लोगों ने जिन्होंने भी PLR एक्सपीरियंस किया है, स्पिरिचुअल गाइड को देखा है, तो यू ऑल नो कि धरती पे ही एक गुरु जरूरी नहीं है, आपको स्पिरिट वर्ल्ड में ऑलरेडी गुरु है और वो आपको ऑलरेडी गाइड भी कर रही है। नाउ एक क्वेश्चन आता है, अगर हम बहुत ही लो लेवल के, सपोज सबका लेवल सेम नहीं होता इस स्पिरिचुअल जर्नी में, ओके, सपोज आई एम इन द 4th स्टैंडर्ड, एज फार एज स्पिरिचुअल जर्नी इज कंसर्न, मैं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ, ओके, एंड देन इफ आई एक्सपेक्ट कि मेरे को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आके पढ़ाए, तो इज दैट पॉसिबल? We should not expect that a university professor will come and teach you. मतलब लाहिड़ी मास्टर जैसा या फिर युक्तेश्वर गिरी जैसा गुरु आए और हमको पढ़ाए, जबकि हमारा लेवल ही नहीं है वो। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? आप में से कुछ भी कोई पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट श्लोक verse 34 of chapter 4 says. Anybody, any question? Shakuntala ji, this is Pooja Yes, Chadha. yes. How do we differentiate that the guru is our, what do I say, our guru? Because like you said, when we are young, for us, our gurus can be our parents. Yes. Gurus can be our teachers. So, so how do we know when we are young that, you know, who is a real guru, who we should follow? Because as a child, we only follow our parents. And if we have a very favorite teacher, then we follow the favorite teacher. And the teachers who criticize, or not criticize, but give us some lessons that this is how you should do, we don't listen to them. So how do we distinguish? Like, Okay. Now there are two things. अभी इस जो वर्ष में हम बात कर रहे हैं गुरु की, ये एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी पे हम जब जाते हैं ना, तो वो कोई एक गुरु जो हमारा हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा, ठीक है। देन देयर आर मैनी, लाइक टीचर एक अलग चीज है, दैट इज शिक्षक। टीचर जो टीच करता है, कोई सब्जेक्ट हमें पढ़ाता है, दैट इज अ डिफरेंट। माता पिता हमारे गुरु हैं, डेफिनेटली हमारे फर्स्ट गुरु, उनसे हम सीखते हैं, वो ठीक है। लेकिन एक हमारे को स्पिरिचुअल जर्नी पे जो गुरु लेके जाएगा, जिनके अंदर वो ज्ञान, वो तत्व, जो सेल्फ रियलाइजेशन, वो जो आत्मा का भाव या ईश्वर से एक होना, दैट इज व्हाट योग, वो जब जानने की इच्छा होती है, तब हमें कोई स्पिरिचुअल गुरु जो मिलता है, दैट इज गुरु, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब आपने एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये गुरु है मेरे लिए, राइट? ठीक है। और जो ये ट्रू बात है कि टीचर्स में भी हमारे फेवरेट टीचर होते हैं और बिना फेवरेट भी होते हैं। एंड लिटरली जिस स्टूडेंट का जो फेवरेट टीचर होता है, उसी में उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में एक रैपो शुरू होती है। एंड स्टूडेंट जो होता है ना, ये इट्स स्टूडेंट एंड टीचर, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। स्टूडेंट जो है टीचर को रिस्पेक्ट देता है, उसमें इंटरेस्ट शो करता है, इसका मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट होता है, एंड इन रिस्पॉन्स उसको बहुत ही वो केयरफुली उनको सुनता है, हॉबी भी करता है, मानता भी है। इन रिस्पॉन्स अपने आप उनको उनसे प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है। अब आई थिंक हाफ ऑफ योर क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है कि कैसे पता लगेगा, इसका मैं आंसर थोड़ा सा डिफरेंट वे में और मेरा खुद का एग्जांपल लेके भी देना चाहती हूँ। एक चीज होती है कि इट्स
It's very common that God is talking to all of us. भगवान हर समय हमसे बात कर रहे हैं, through some other person, through some other event, through some maybe message. किसी भी तरीके से भगवान हमसे बात कर रहे हैं, हर किसी से बात कर रहे हैं. The question is, who listens? कौन उनको सुनने के लिए तैयार बैठा है? That is, तो कभी भी अल्टीमेटली गुरु हमारे गॉड ही हैं और वो किसी न किसी के थ्रू हमसे बात करते हैं. कई बार आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसी जगह से मिलेगा जहां से टोटली अनएक्सपेक्टेड. लेट अस से कोई फैमिली मेंबर या आपको कोई आंसर दे रहा है और आप नॉर्मली उनके एडवाइस लाइक नहीं करते, कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, बट समटाइम्स यू विल गेट दैट पर्टिकुलर आइडिया जो आपका फिट बैठता है. तो हु इज टॉकिंग एट दैट टाइम? ओनली गॉड इज टॉकिंग टू यू थ्रू दैट पर्सन. कभी किसी सॉन्ग में आपको आंसर मिल जाएगा, कभी सडनली एक न्यूज़पेपर उठाया, आउट ऑफ द ब्लू आपको एकदम एक लाइन में आंसर मिल जाएगा. आजकल व्हाट्सएप में मैसेजेस बहुत आते हैं, सडनली एक ऐसा व्हाट्सएप पे आपकी निगाह पड़ जाएगी. अदरवाइज आप पूरे ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं पढ़ते हो, एक उस मैसेज पे आपकी निगाह पड़ जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा. सो हु इज सेंडिंग दैट? गॉड. गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल वर्ल्ड. वो हर समय हमारी नजर उनसे हट सकती है, भगवान की नजर हमसे हट नहीं सकती. वो हर समय हमें गाइड करे, वो हेल्प करे. दिस इज आई थिंक. और एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ और बिल्कुल ही ओपनली ये बोलना भी चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैंने PLR की ट्रेनिंग करने के लिए मैं ऋषिकेश में गई थी मैम के पास 2014 में, एंड वहाँ पे कुछ रियलाइजेशन हुआ था. मतलब गुरु आपके लिए या आपके साथ कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं या उनके मुंह से निकलता है, दैट इज व्हाट यू वर लुकिंग फॉर. ठीक है, सबसे पहले. और एक ये भी होता है, गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में, यू आर नॉट रेडी, आपका वक्त ही नहीं आया है. ठीक है, तो आप एक बार उनको मना भी कर देते, आप वहां तक उनसे मिल भी ना पाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और फिर हो सकता है सेकंड चांस आए, फिर आप ना मत करो. जब कोई चीज, अपॉर्चुनिटी, कोई चीज आपकी लाइफ में रिपीट होती है, जस्ट ग्रैब इट. ओके, अब मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ. एंड मैं ओपनली रियली आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तृप्ति मैम इज माय मेंटर, शी इज माय गुरु इन ट्रू सेंस. 2014 November 1st I met her when she came to Jaipur. जयपुर में हमारी वर्कशॉप थी, 2 days की थी. उससे पहले एक बार मैंने सुनने में आया था कि 2011 में भी शी केम टू जयपुर, और मुझे मैसेज में मिला था कहीं से कि आप मैम आ रही हैं और आप ये वर्कशॉप अटेंड कर लो. और मेरे पास 1000 बहाने थे. आई एम बिजी विद माय वर्क, मेरा इतना 8 hours का जॉब है एंड आई कांट. एंड लिटरली अंदर से एक इच्छा जरूर थी, यार ये पास्ट लाइफ तो मुझे जरूर जानना है, बट आई कुड नॉट. मैं नहीं गई. जो भी है, मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी, या आप यूं कह सकते हैं आपका वक्त नहीं आया, मेरा वक्त नहीं आया. 2014 में मे बी आई वॉज ऑल रेडी. आई हैव रिजाइन फ्रॉम द जॉब अप्रैल में, एंड आई गॉट ऑल द बुक्स ऑफ ब्रायन फिश, सारी 5 बुक पढ़ के एकदम तैयार थी. एंड इन September आई गॉट द मैसेज दैट तृप्ति मैम इज विजिटिंग जयपुर अगेन. फाइन, अटेंड किया. इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. दो आई एम नॉट अ विजुअल पर्सन, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. जो क्लूज मुझे मिलने थे मिल गए थे, बट अभी भी वो गुरु और डिसाइपल वाला कोई सीन या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं था. देन इन December 2014 मैं ऋषिकेश गई मैम से सीखने के लिए. इट वॉज वेरी फर्स्ट डे और मे बी सेकेंड डे. अब ये मेरे मन की बात है, मैं आज आप सबके सामने आराम से शेयर करना भी चाहती हूँ. हम क्लास में पढ़ रहे थे और मैम ने कुछ हमको बताया कि
आप ये सीडी बना के देंगे अपने क्लाइंट को, जिससे वो आपकी वॉइस का यूज टू हो जाए, ये मेडिटेशन करे, चक्रा मेडिटेशन करे, लेकिन प्लीज इसके लिए चार्ज मत करना, जस्ट गिव देम दिस सीडी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी ना, आई कैन टेल यू। मे बी मैं स्कूल टीचिंग से आई थी या कॉर्पोरेट टीचिंग से आई थी, यहाँ पे क्या है, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर चीज मनी माइंडेड और इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है कि ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती। वो स्ट्राइक हुआ, उसके बाद में जस्ट 7 PM पे वहां पे डिनर होता है, आई वाज जस्ट डूइंग माय डिनर, और ऊपर देखो आसमान में तारे बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। अब ये एक मन में एक आवाज आई, अब अंतरात्मा की थी आवाज या क्या थी, एक अंदर से एक आवाज आई, और ऊपर मैं आसमान में तारों को देख के बोल रही हूँ, थैंक यू गॉड, आई एम एट द राइट प्लेस एंड इन राइट हैंड्स। ये वॉइस निकली थी, एंड दैट टाइम आई रियलाइज, यस शी इज माई गुरु। और उन्होंने ये मिस्टिक जर्नी, देखो लॉजिकल माइंड, किताबें, आईटी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब बहुत पढ़ ली थी मैंने अपने जीवन में, 22 ईयर्स से भी ऊपर हो गए थे ये सब पढ़ते। लेकिन ये जो एक चीज थी, ये दिस इज ऑल 10% कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड, देन देर इज ऑल मेन जो खजाना है वो तो 90% सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, पास्ट लाइफ थेरेपी, ये सब। वो जब वहां पे सीखी तो डेफिनेटली ये एक मटेरियल वर्ड से थोड़ा डिवाइन वर्ड की तरफ जाने वाला मेरा रास्ता खुला। सो अच्छा, अब मेरा जो लेवल होगा, मुझे मेरी टाइप में उसी के हिसाब से गुरु मिलेंगे, तो शी इज परफेक्ट फॉर मी। अभी मैं कुछ उतनी संत महात्मा तो नहीं हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद ही आके गुरु मिलेंगे या रामकृष्ण परमहंस मिलेंगे, या मैं उम्मीद करूं कि लाहिड़ी महाशय ही आए या कोई भी आए। एंड इनफैक्ट ये जो बुक है जिसको मैं भगवत गीता को अक्सर कोट करती हूँ और यूज करती हूँ, दिस इज गॉड टॉक्स विद अर्जुना, रिटन बाय परमहंस योगानंद। इन्होंने इसी में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, उसका स्लाइड मैं नहीं बना पाई, बट आई वुड लाइक टू से कि गुरु जो होते हैं, ये जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, ये यहाँ से जाने के बाद में भी, इवन व्हेन दे लेफ्ट देयर बॉडी, दे आर स्टिल गाइडिंग अस फ्रॉम अबव। ये सब गाइड कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कोट किया है, मैं ये सब चाहे अपना ये शरीर छोड़ दूं कपड़ों की तरह, लेकिन मैं ऊपर से सबको गाइड, मैं फिर भी सबको गाइड करता रहूंगा जब तक कि ये सारे लोग परमात्मा में स्थित नहीं हो जाए। सिमिलरली परमहंस योगानंद जी ने भी बोला है कि आई विल कीप गाइडिंग। साईं बाबा, उनको इजीली मोक्ष अटेन कर सकते हैं, हो सकता है, बट ही सेज नो, मैं यहाँ पे आके लोगों की मदद करता रहूंगा और हेल्प करता रहूंगा। इतने एग्जाम्पल्स। आई थिंक मैंने आपके आंसर कुछ ज्यादा ही डिटेल में दे दिया। Thank you, ma'am, so much. Thank you. Any other question? Ma'am, I have a question about Yes, yes, gurus. yes. Ma'am, so I took Diksha in yoga from 4 global yoga gurus, and I always had some questions. Like when they used to teach in the shala, in the yoga shala, or in during my courses, Yeah. they were different. And when I saw them up front, very close, facing another yoga guru, facing another, I can't name those gurus, facing them Yeah. and sitting on the same platform, they are going against what they are teaching. Like वो Correct. जो हमें बोलते हैं निंदा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कमर्शियल नहीं होना, और जब मैं उनको बहुत पर्सनली देखा तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बिहेवियर में थे. They were not the same guru That's okay. who I, तो मतलब मैम मेरे दिल में बहुत लड़ाई हुई और मन में दिमाग में बहुत लड़ाई हुई और आई वॉज वेरी अपसेट. एंड ऋषिकेश में ही थी, हमारे योग फेस्टिवल्स वहाँ होते थे. सो आई कॉल्ड माय मदर एंड आई was very broken that whom do I trust? You know, so far 2 yoga gurus trained me. They also kind of broke my heart. Like they went against their own teachings and behavior.
then third and fourth Yoga Guru. Now these all gurus have come on TV. They come on TV and are very famous ones. And उनसे सीखने का मौका मिला. But then when I saw them camera के पीछे in real life, so I was very broken. So ma'am, like, and millions and trillions of people consider them as gods, and I was very heartbroken. So ऐसे में Yoga Gurus कैसे, how can you trust someone again? Like Trupti ma'am is my mentor, is my guru. She transformed my life. But I'm talking about Yoga Gurus. Yes. Okay. Please, इसका answer नहीं I got your point. Okay. And thanks for asking this question. Actually, कल ही जब मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पढ़ा रही थी, तो I was telling the 10th house. I was explaining there are two different things. One is name and fame, and one is respect and honor. Name and fame is given by sun, the planet which gives name and fame. Sun सबसे ज़्यादा चमकता है आसमान में. That is given by sun. Okay? And the respect and honor, it is given by Jupiter, the planet Guru. It is the planet of spirituality. So don't get confused. If someone has got name and fame and he is also spiritual, not true. These are two different things. Mind में से निकाल दो. जो ट्रू स्पिरिचुअल गुरु होते भी है ना, उनमें इतनी ह्यूमिलिटी होती, इतनी हम्बल होते हैं वो, कि वो छलकता है, और आपको उनसे मिलके उनके ऑरा में वो बैठ के ही आपको वो चीज आ जाएगी. और जो ट्रू गुरुज होते हैं ना, वो फोटो भी नहीं खिंचाते. दे डोंट कम इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब नेम एंड फेम की तो बात ही छोड़ो. अभी आगे हम बात करेंगे. और लास्ट जो हमारी भगवत गीता क्लास हुई थी, जो सेशन हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, उसमें था कि ये 5 इंद्रियों को, पहले इंद्रियों से तो खींचो अपने को, फिर हम कैसे धीरे धीरे उन्नति करके हमारा जो है वो आत्मा में स्थित होगा. हमारा जो भी सेल्फ रियलाइजेशन है कैसे होगा. तो जब तक हमको नेम एंड फेम इसकी इच्छा है, तो अभी तो हम 0 क्लास में ही हैं. डोंट वरी. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नेम एंड फेम एंड ट्रू स्पिरिचुअलिटी. दैट्स डिफरेंट. Right. Thank you, ma'am. I saw a real guru in Trupti ma'am only and I still remember her lines when she gave me certificate in Rishikesh. Apurva, your life is going to transform, and honestly, my life has transformed. I'm not the same person after my first screening. Deepest gratitude to ma'am. मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं लिख सकती, जो बोल ही नहीं सकती जो मैम ने किया है. Changed my life completely. So bas, you have found your guru. That's it. हम प्राइमरी क्लास में हैं, ठीक है, हमको प्राइमरी स्कूल टीचर मिल गया. ऐसे मत समझो कि वो, और हमें नहीं पता मैम कितनी एनलाइटेंड है. आई नो हर मेनी ऑफ हर पास्ट लाइफ्स. सो आई नो उनकी पास्ट लाइफ जीसस क्राइस्ट के साथ भी हुई है, उन्होंने देखी है. आज मैम जरा ऑफ द सीन है क्योंकि उनका लैपटॉप थोड़ा ऐसे है, बट बाद में वी विल गिव फुल चांस मैम टू स्पीक ऑन ऑल दैट. आज पूरा ओके. लेट अस मूव अहेड एंड आई होप गुरु के बारे में कुछ क्लैरिटी हुई है. एंड देन देयर इज अ व्हाट्सएप बहुत क्लियर कहता है कि टीचर कौन होता है, शिक्षक कौन है, आचार्य कौन है, और ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं. एंड दैट्स वेरी ट्रू. ओके, सो इट्स ओके. जो आपको योग सिखा रहे हैं दे आर योगाचार्य. दैट्स ओके. और देखो, सबकी अपनी फ्री विल है. दे हैव देयर फ्री विल. वो अपने कर्मा अपने साथ लेके जाएंगे, हम अपने कर्मा हमारे साथ लेके जाएंगे. हम क्यों किसी की निंदा करें, या हम क्यों किसी के बारे में निंदा के बारे में सोचें. हमें अपना प्योरिफिकेशन करना. एंड द बेस्ट बुक इज भगवद गीता. एवरी आंसर यू विल फाइंड. Every answer you'll find in this. Okay, chaliye, I'll just continue with the slideshow
and next slide. So बाकी तो क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे. एक और हॉट टॉपिक रहता है मोक्ष प्राप्ति, साल्वेशन. इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास कई बार आते भी हैं लोग और वो अपने होरोस्कोप में कुछ दिखा के बोलते हैं. बट एनीवेज बिफोर दैट, हाउ मेनी ऑफ यू विश टू अटेन साल्वेशन? अब मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू सी योर रेज हैंड, अदरवाइज के सभी कम. मेरे को काउंट करना है. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अटेन मोक्ष प्राप्ति? विश है. 1, anyone? Okay. 2, 3, 4, Not yet, ma'am. 5, 6. Okay, good. Okay, and there are a few more hands. Okay, let us say 10. Let us say 10. Okay, then my next is how many? This is how many of you who wish to attain. Okay, then next question is how many of you think that you will attain salvation? आपको मोक्ष प्राप्ति मिल ही जाएगी. अब मैं फर्स्ट वाले में तो आई विल रेज हैंड, वो तो चाहिए, लेकिन मिल जाएगी या तो क्वेश्चन मार्क है. ओके, सो एनीवन हु हैज रेज्ड हैंड बिफोर एंड नाउ दे विल से कि नो. कोई चेंजेस? ओके, वर्षा जी इज विद मी. वर्षा जी अपन साथ साथ ही जाएंगे. एनीवन एल्स? Okay, 2 more hands. So that is the fact. हम चाहते हैं, ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखा जाएगा, बट उस रास्ते पे हमें चलना है. अल्टीमेटली तो सभी को मिलेगा, किसी को देर से किसी को जल्दी, बस उस रास्ते पे चल रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन statistics and mathematics and more calculation part. जब कई बार लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी में, थोड़ा सा मैं आज एस्ट्रोलॉजी का भी चार्ट दिखाना चाहती हूँ. द मिथ क्या है? okay. कई बार लोग आते हैं और वो कहते हैं मेरा तो जुपिटर 12th हाउस में है. ये दिस इज जस्ट अ नॉर्मल होरोस्कोप एंड दिस इज 12th हाउस. 12th हाउस इज ऑफ मोक्ष. ओके, सो दिल से मेरा तो जुपिटर 12th हाउस में है, मुझे मोक्ष मिलेगा. ओके, what happens in a day? आपके चार्ट में 12 टोटल लग्न आते हैं and in a day, so out of 12 people, एक दिन में अगर 12 लोगों का जन्म हुआ है तो out of 12 people 1 person will find Jupiter in 12th house. In that case क्या प्रोबेबिलिटी आती है? 0.0833. इसको परसेंटेज में करें, मतलब दिस इज आउट ऑफ 1, तो हाउ मेनी आउट ऑफ 3? out of 100, sorry, that is percentage. So it comes 8.33%, right? कैसे लोग बाग अपने इस चीज को तोड़ मड़ोड़ भी देते हैं, उसको भी देखते हैं. देन नेक्स्ट, फिर कुछ लोग आते हैं वो बोलेंगे मेरा तो केतु 12th में, and केतु is this is the planet of spirituality and this is the planet of moksha. Okay, so वो आके मुझे बोलेंगे मेरा तो केतु 12th में, मुझे तो इस जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, अब मुझे और जीवन नहीं चाहिए. ओके, फाइन. सो इन दैट केस अगेन 8.33% विल बी गेटिंग मोक्ष अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन. आई एम टेलिंग यू, ये जो मिथ जो चल रहा है. ओके, नाउ इफ आई ऐड दीज 2 टाइप्स ऑफ पीपल तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/12, दैट इज टोटल 16.67 पीपल विल बी गेटिंग मोक्षा. अगर हम वो लोग जो भी क्लू ला रहे हैं, जो भी उनके हिसाब से जो भी नॉलेज उनको है वो लेके आ रहे हैं, तो इट शुड बी लाइक दिस. ओके, देन एक्चुअल फैक्ट क्या है? फलदीपिका सेज बोथ जुपिटर एंड केतु आर इन 12th हाउस आर मोक्ष कारका. इट इज द फैक्ट. सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें समझनी होगी. जुपिटर एंड केतु बोथ दे आर पॉजिटेड इन 12th हाउस. ओके,
सो ये कब होता है? जुपिटर एंड केतु साथ में कब आएंगे? जुपिटर एक साइन में 1 साल रहता है, फिर इस तरह से मूवमेंट करता है। केतु बैक में मूवमेंट करता है और 1.5 इयर्स एक राशि में रहता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ तक आगे आने में और इसको पीछे आने में तकरीबन 9 इयर्स लग जाते। सो इट टेक्स 9 इयर्स। नाउ 9 इयर्स के डेज भी बनाने पड़ेंगे हमको। सो 1/12 इंटू 9 इंटू 365। इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी गेट दिस वैल्यू द परसेंटेज में। ओके, दिस द एग्जैक्ट वैल्यू वी गेट एंड देन परसेंटेज करेंगे तो 100 बढ़ जाता है। तो इट इज 0.001 वी कैन से। 99 को अगर हम राउंड फिगर करेंगे तो इट कैन बी 100। तो 0.001, this is one calculation we get, okay, and that is quite true. Let us see what Bhagavad Gita says. भगवद गीता का एक मैंने आज एडिशनल श्लोक नेक्स्ट चैप्टर से उठा लिया है, दैट इज चैप्टर 7 एंड उसका वर्स 3। व्हाट इट सेज, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हार्डली वन अमंग थाउजेंड्स ऑफ मैन स्ट्राइव्स टू रियलाइज मी। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ऑफ दोज स्ट्राइविंग योगीज अगेन सम रेयर वन डिवोटिंग हिमसेल्फ एक्सक्लूसिवली टू मी नोज मी इन रियलिटी। जो भगवान को तत्व से जानते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के वहां तक होते हैं। ओके, सो आउट ऑफ 1000 1 ट्राई करता है और आउट ऑफ दोज ट्राइंग 1000 पीपल उनमें से कोई एक को मोक्ष मिलता है। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, उस पर आते हैं। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। दिस स्टेंजा ऑफ द भगवद गीता पॉइंट्स आउट दैट most men use their free will to choose to ride on ceaselessly with the storm of delusion. आप अपूर्वा, आपका थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। Many thousands of human beings, perhaps only one desires to re-enter that divine ocean. श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक संकेत करता है कि अधिकांश मनुष्य अपनी फ्री विल का प्रयोग माया के तूफान का पर निरंतर सवारी करने के लिए कर, वो इसी में ही फंसे हुए हैं, वही 5 सेंसेस माया के उसमें। और ऐसे कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही दिव्य महासागर में पुनः प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, डिवाइन ओशियन में वापस जाने की। जो लास्ट टाइम श्लोक नंबर 1 और 2 में हमने बताया था, राजयोग, उसमें एक्सप्लेन किया था कैसे कॉन्शियसनेस को नीचे से इंद्रियों से हम ऊपर तक उठते हैं वो। ओके, नाउ इस फैक्ट को अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं वही चीज, ठीक है। सो आउट ऑफ 1000 ओनली वन इज द सीकर एंड आउट ऑफ 100 such seekers only one attains. Hence 1 out of 1 million. 3 0 here, 3 0 here. 6 zeros means 1 million. Okay. Hence 1 out of 1 million knows him in reality. 1 million में से एक को ही मिलता है मोक्ष, पॉसिबिलिटी। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो, क्योंकि परसेंटेज निकालते हैं तो 20 इसका कम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 होने से। सो द वैल्यू कम्स 0.0001 00001 एंड दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग। ये यहाँ पे जो कैलकुलेशन की थी तो फल दीपिका इज नॉट रॉन्ग, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रॉन्ग, हमने उसका मतलब अलग निकाल लिया। हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके ऐसे एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं और फिर बदनाम भी। एनीवेज, so this value is very much near to this, that is 0.001, not near बल्कि exactly वही value आ रही है। So this is what the fact is. मोक्ष प्राप्ति का भी एक जरा मिथ है ना, वो क्लैरिटी होती है। बट the good thing is don't lose hope. भगवद गीता वो भी आंसर देती। Then
मतलब हम उम्मीद नहीं छोड़नी, इतनों को मिलेगा, इसमें मेरा क्या चांस है ना, आपको चलना है, डोंट लूज होप। देन अगेन चैप्टर 4 वर्स 36, ये क्या कहते हैं? दिस इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग स्टैंजा, सबसे ब्यूटीफुल श्लोक है जो हमको बहुत तसल्ली देता। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृत में भी देखें तो लॉर्ड कृष्णा ने बहुत डिटेल में पापेभ्य, ये प्लूरल फॉर्म हो गई पाप, और सर्वेभ्य मतलब सबसे ज्यादा, और पाप कृतम एक्चुअली वर्ड होता है पाप कृत, फिर होता है पाप कृतर, फिर होता है पाप कृतम। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वैसे ही इन दैट केस उच्च उच्चतर उच्चतम। तो सबसे ज्यादा पाप करने वाले पापियों से भी ज्यादा पापी है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा वो तर जाएगा। मतलब ये ज्ञान ही हो गया ना चैप्टर, ज्ञान। ज्ञान क्या? वो आत्म तत्व का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने और भगवान के बीच की एक हो जाना, मोक्ष प्राप्ति। Even if you were the most sinful of all sinners, this knowledge alone would carry you like a raft across all your sins. Okay. एक बहुत ही satisfying statement है इसी वर्स का, rid yourself of sin by wisdom. Knowledge का मतलब वहां पे जो ज्ञान है that is wisdom, जुपिटर वाला ज्ञान। Okay. By these words, Bhagavad Gita gives hope to the hopeless. ज्ञान के द्वारा सर्व पाप से मुक्त। ये जो भी ज्ञान है, जितना भी आप ले सको, खुद पढ़ लो, कहाँ से मिले ले लो, दैट इज ओके। इन शब्दों से श्रीमद् भगवद गीता निराश लोगों को आशा देती है। क्योंकि ये किसने लिखा है? जिन्होंने भी लिखा है वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश, गॉड का ही रिफ्लेक्शन है, और वो आत्मा बिल्कुल प्योर है, पवित्र है और परिपूर्ण है, उसको कुछ टच नहीं करेगा। ये जो हमारे, अब आपका और आंसर मिल जाता है कि ये जो हम गुड बैड ये सब समझते हैं ना, वो सिर्फ हमारी इंद्रियां कर रही है, मन कर रही है, बुद्धि कर रही है, आत्मा हमारी अनटच्ड है, उसको अभी भी चांस है इम्प्रूव होने का, इट कैन इम्प्रूव। हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट राहुल ने क्वेश्चन पूछा है, बट हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट इज सिन? सिन का तो बहुत क्लियर इसमें इन्होंने लिखा है कि ऐसा कोई भी काम जो हम इस दुनिया में जो मोह माया है उसके लालच में आकर के कुछ भी गलत काम कर ले, जो उचित नहीं है, वो पाप है। दैट इज सिन। ओके। कई बार आप जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और पाप है, इन ये एक चीज नहीं है। आप रूल्स ब्रेक करके भी पाप नहीं कर रहे हो, और कई बार आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट के और कानून या लॉ ये सब बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करके भी पाप कर सकते। सो पाप और पुण्य की डेफिनेशन अलग है। These rules, who set the rules? रूल्स तो हमने यहाँ पे अर्थ पे खुद ने सेट करे, ह्यूमन बीइंग ने सेट, ओके। बट द पाप इज समथिंग जो वेदा में एक्चुअली सेजेस भी भगवान के थ्रू ही हमारे पास आए। आई होप आई कुड give you some proper answer, nahi to maybe in the end when ma'am will start she can give better answer on this. Now so एक चीज हमको इसमें समझनी है, ये पाप और इसका, कि कैसे हम पाप से मुक्त हो सकते हैं।
कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, लेकिन ये इस जन्म के भी पाप हैं और पीछे के भी पाप हैं, पिछले जन्मों के भी पाप है, उनसे कैसे हम मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है इस वर्स में। As darkness of 100 of years disappears, as soon as a lamp is lit, it does not take time, so do sin disappears, as soon as knowledge of the self is gained. आप देखो, एक कमरे में कितना भी अंधेरा है और वो कमरे में अंधेरा भी 100 सालों का हो, डजंट मैटर, एक छोटा सा दीपक आप जला दो, वो इमीडिएटली दीपक जलाते ही पूरी रोशनी हो जाएगी, कितना भी पुराना अंधेरा हो। यहाँ अंधेरे से या darkness से मतलब हमारे सिन से ही, हमारे अंदर चाहे जितने सिन हो, चाहे जितने हमने पाप किए हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बैठ गए ध्यान करने इस रास्ते पे चलने, और जिस दिन आपको गॉड रियलाइजेशन हो गया, इतना उजाला हो जाएगा कि वो पुराने पाप अपने आप धुल जाएंगे। और वैसे भी भक्ति करने से हमारे इवन पूर्व जन्म के करे हुए पाप भी धुलते हैं, इसीलिए मंत्र, चैंटिंग, ध्यान, ये सब मैटर करते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका, ये है गौतम बुद्धा और अंगुलीमाल। एक कहानी सबने सुनी है, अंगुलीमाल करके एक डाकू था, जंगल में रहता था और जिस लोग को भी मारता था उसकी अंगुली की माला बना के पहन लेता था, तो अंगुलीमाल इसका नाम हो गया। एक बार भगवान बुद्धा, गौतम बुद्धा वहां से गुजरे, तो इन्होंने इसको, ये भी इनको मारने के लिए दौड़ा, लेकिन यह तो बिल्कुल शांत थे, इनके ऑरा में आके वैसे शांत हो गया। फिर इन्होंने बोला इसको, एक काम कर, तू मारना है तो वो सब कर लेना, लेकिन पहले एक काम कर, सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ के ला, 4 लीव्स तोड़ के ला। अंगुलीमाल गया, 4 पत्तियां तोड़ी और ला करके लॉर्ड बुद्धा को दे दी। अब लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, अब एक काम कर, इन पत्तियों को जा करके वापस उस पेड़ पे लगा दे। अंगुलीमाल बोला, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। तो लॉर्ड बुद्धा उसको बोलते हैं कि अगर जिस चीज को तू वापस नहीं जोड़ सकता, तोड़ क्यों रहा है? ऐसे ही लोगों को क्यों उनकी अंगुलियां काट रहे हैं, उनको तोड़ रहे जब तू जोड़ नहीं सकता। उससे इसको गॉड रियलाइजेशन हुआ और ये इनके डिसाइपल बन गया और बाद में उसको ज्ञान भी हुआ। मतलब सोचिए, ये वाला वर्ड्स है, कितने भी पापी क्यों ना हो, ओके, कितने भी आपने पाप किए हो, उस दिन आपको गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कितना आपने कितने भी मर्डर करे हो, तो उस जीवन में भी वो पाप करके आपको ज्ञान मिल सकता है। So this was the part from my side, and now Trupti ma'am. Hi. Yes, ma'am. Hello, everybody. Shakuntala, that was beautiful. The story was also lovely. So I have sent Shakuntala my slides, a couple of slides. Yes, so ma'am. Shakuntala can start with that. So we are going to start with the verse 7 and 8, one of the most famous verses of chapter 4 and of the Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Dharmasya. I think everybody has heard this shloka. And I would love if we all can say the shlokas together. You can all put your audio on and we can just say the shlok together. The most beautiful shloka. Yada yada hi dharmasya. Dhyanir bhavati bharata. Abhyuthanam dharmasya. tadatmanam Tadatmanam sujanyaham. Paritranaya sadhunam. Vinashaya dushkritam. Dharma sansthapanaya. Sambhavami yuge yuge. So if you just
the shlok is so beautiful because it actually tells you that the Lord tells Arjuna that whenever there is virtue declines and vice or adharma predominates, I will incarnate as an avatar. This is the first time Krishna speaks about the word avatar, right? So indicating that he's an avatara. He's not God. This is the first thing that we have to understand from this shloka. He's not saying I'm God. He says I'm an avatar. That means God does not incarnate as God, correct? God incarnates as a liberated master or as a liberated soul or as a fully liberated soul like Krishna. This is the first time he says avatar, the first word that he uses. He also says in visible form, I appear. That means you will be able to see me. I'm not going to hide. I'm not going to do work secretly, but I appear to you. I'm visible to you. That's the second interesting part that Krishna speaks about. And he says, I appear from age to age. Now, what does that indicate? It means he incarnates. He does not disappear, but he keeps incarnating from age to age. That means avatars do keep coming back. Not that they are an avatar and they are fully liberated, so they are going to attain and moksha and never return back to the planet. That's not true. So this statement, this verse actually tells us that I appear from age to age. Why does he appear from age to age as an avatar? To protect the virtuous and to destroy evil doing in order to re-establish righteousness. So the avatars return back repeatedly so that they can remove adharma. That means they can see to it that the evildoers do not continue what they're doing, and they support the virtuous, and they come back because there has to be re-establishment of righteousness. They have to re-establish dharma, indicating if avatars are appearing from age to age, from one time to another time, that means a dharma is also appearing on this planet every thousands of years. This means there is a cycle, right? There is dharma, adharma coexisting at one point. Then adharma increases. And now when adharma increases, the avatar arrives because the avatar feels that if this continues, then the world will come to an end. And the drama of life, or the drama in which God is so engrossed, will obviously come to an end. So because God wants this drama to continue, the avatar comes and re-establishes some kind of righteousness. This indicates that like the war of Kurukshetra, there are going to be multiple wars across civilizations, across lifetimes. ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र एक ही war थी. There could have been multiple wars like this, thousands of years. If you look at it, that means this cycle of peace and war and peace, has been continuing since time immemorial. This verse itself tells us everything about karma and everything about right and wrong. Rahul asked the question of sin. So I just want to tell everybody that let's take an example of a doctor. Okay, the doctor has to perform surgery, and the doctor knows that he will save the patient. So he performs surgery and the patient is saved, and everybody says, Doctor, aap to Bhagwan hai, right? He's done a good act, punya. Now let's take the same example. A doctor goes to the OT and sees a patient, and he knows that this patient is not going to survive. He's going to die.
he has two options. One, to do surgery in spite of the fact that maybe the patient will die, or not to do surgery because he does not want to be part of a failure. What do you think? How in these two things, the doctor does the surgery, patient dies, doctor says the patient is going to die, I better not do the surgery. This conflict that the doctor is in, can you explain? Anybody can explain? Maybe Rahul can throw some light on sin, on pap and punya in this particular example. Anybody or Rahul can throw some light on pap and punya in this example. The doctor is doing surgery. He knows the patient is going to die, but he does surgery. He knows the patient is going to die, but he does not do surgery because anyway the patient is going to die. Now, this is a conflict. So, and anybody can throw some light on this? Uma ji. What should the doctor do? मैम आई कैन से कि पुण्य उसके डॉक्टर के लिए यही है कि वो सर्जरी करे, क्या पता बच जाए वो मेरे हिसाब से वो उसके लिए राइट होगा. Okay. But depends, Right. ma'am. In case if the patient is too much in discomfort and there is no hope also, then maybe a good thing for the doctor to let things happen as they are. Okay, right. So now we have two opinions here. Uma ji ka opinion or Rahul ka opinion is different. Okay. Now the thing is, doctor ka kaam kya hai? Bachana. What is the work of the doctor? Bachana. Doctor ka नहीं बचाना है. Doctor का काम ट्रीटमेंट करना. Yeah, because we are talking about Gita, we are talking about duty. Karma. Because Krishna told Arjuna this is his duty. Correct. Now, doctor की duty क्या है? To do his work. Right? To save people, to help people, to aid people, to reduce the suffering as much as he can. Right? But if he starts thinking of the result, that even if I do surgery, anyway, this is a gone case, why to do surgery and waste my time? Let me go to another hospital where there is a patient whom I can save. Then do you think he is going to incur sin? Because he has not done his duty. What he is trained for. His training is that even if there is a patient, see to it that his suffering reduces. So he can give him an injection and reduce his suffering. But he should do something. He cannot leave the patient and say that now this patient is anyway going to die, so iske upar kuch karne ki zarurat nahi, let him go. Then that is not what he is trained for. Because in a hospital, doctors are not told this. If the patient is dying, let him go. We put the patient on a ventilator. We put the patient oxygen. Yeah, we do everything in our power so that the doctor can save the patient, correct? That is his duty. But ma'am, a lot of times the lives are prolonged, like we often see in hospitals. Yes. They are prolonged. Yes. And it comes to being unethical also. See, the thing is, as you know, there was a case here in Bombay of a nurse, who was in coma for 42 years. And the hospital staff maintained her. The hospital staff, KM Methi, where I actually got trained, she was there in that hospital, and the hospital staff maintained her because her parents and brothers and sisters gave up. But the hospital staff said, no, she's one of us and we will maintain her. So the thing is, it is very what we all think, kind of prolonging life. Why should the person be put on a ventilator? There is no need to do that. She's suffering. Maybe she's opted for suffering. Is it not possible that the soul could have opted to suffer in the body rather than out of the body? Is it possible that as a soul, you want to complete your suffering in this body and not take any of the suffering forward? Correct? If you look at the multiple examples that we have of people put them on
I mean, when the doctors, try and kind of prolong their life, it indicates that as souls, we would like to complete our suffering in this lifetime, in this body, rather than carry their suffering forward. Because the moment I carry the suffering forward, it is possible it will impact my next lifetime in some way or the other. If I have chosen to depart in a short span of time, maybe my suffering is over. And so I have already departed. The choice of death should be made by the person, not by the family members, is what I believe. Because if you look at the Bhagavad Gita, then Krishna has clearly said that you have to do your duty in whatever role you are. So if the doctor's role is to save people, then by hook or by crook, till the last attempt, he has to do and save people. Because that is his duty. As a student, what is your duty? To study, to get marks, to get good marks, to do well in your exams, to respect your teachers, to not steal and learn all these various yama that we have. So the thing is, what is the role that you're playing? As a husband, what is your duty? As a wife, what is your duty? As a teacher, what is your duty? I think if we go by duty, our focus or conflict rather will not be between pap and punya. We will accumulate punya. What do you all have to say? If you are dutiful, do you think we can accumulate punya karma? Your two words. पुण्य तो ऐड ही होंगे, स्वधर्म से पुण्य तो ऐड ही होंगे. Correct. Yes. जब हम अपनी ड्यूटी करेंगे, in whatever roles that we play multiple roles, right? If we don't play just one role, then professionally. Let us say you are professionally a doctor and you're doing your duty, but at home you are kind of beating your wife. You have taken the role of a husband. That is why it is very difficult to Shakuntala ji asked that question, that in this lifetime, how many of you want to attain moksha? But to attain that sense of liberation, we will have to be dutiful in every role of ours, right? The doctor may be dutiful in the hospital, but not at home. So your sense of duty has to be complete in every role that you play, in every situation that you are put in. Then possibly our container of punya could increase faster. So this is what I feel in the Gita very clearly. The focus has been on duty. And the entire Bhagavad Gita, Krishna has insisted that Arjuna as a warrior do his duty. Arjuna, when he was at the battlefield, what happened to him? He wanted to not fight the war because he saw his loved ones in front of him. If there was somebody else, maybe he would have fought the war, but not with Bhishma right there, with Vidura there. He did not want to fight the war because he didn't like the results that would come. So I think the Bhagavad Gita very clearly says, and we'll speak about the verses 18, 19, 20, where they speak about the three kinds of karma that we do. But let's continue with this shloka now. So इस श्लोक में बहुत clearly तीन चीजें mentioned है. एक है अवतार. That means Krishna is an avatar. He is not God. Because God does not reincarnate as God, but God incarnates as fully liberated soul. So Krishna is definitely a avatara. He has also said that he appears from time to time, indicating he is timeless. He is not bound by a certain time, but he can keep appearing time after time. If we are also ईश्वर का अंश अगर हम है, तो हम भी तो timeless हुए ना. We are also timeless.
We will also appear age to age, means we are ageless, timeless, and we are permanent. We are infinite. We live in a temporary body, but in effect, we are permanent. And the third thing is that the balance between virtue and vice, when it is disturbed, to re-establish righteousness, a avatar appears. Let's look at the next slide. There are a couple of questions put up there, and I want you all to think of those questions that I've put up, and let's have some answers from you all itself. First question: can God incarnate on the earth, and if so, how? ये मैंने आंसर कर दिया है. God can incarnate on the earth in the form of minor saints. There are many saints that we have on this planet, and also as fully liberated saints. So there are a lot of minor saints who help so many people, right? साधु संत महात्मा जिसको हम कहते हैं, और एक है अवतार. साधु संत महात्मा अवतार नहीं है. They are minor saints who have accumulated a lot of punya karma. They are at that point of becoming an avatara, but they still have some karma left to do, and they have come back to the earth so that they can purify themselves further. At the same time, as they purify themselves, they can help so many more people. Okay, so these minor saints are found in ashrams. Sometimes they are found in the Himalayas, walking alone, right? You go and sit with them, talk to them, and they teach you something here and there. But they are on their own journey, right? And they're willing to help others who will approach them. There are many of these saints that are there all over the world, right? And there are avatars. When you call them, when will you call somebody an avatara? When there is a world mission. These saints may not have a world mission, but there are avatars who have a world mission. Yeah, they come with a deep purpose, and the purpose begins early in life. So God can incarnate on this earth, and if so, how? As fully liberated souls or as minor saints. Second question I put up: is there a difference between avatars and minor saints? Can anybody tell me what will be the difference in your own way, in your own understanding? What will be the difference between an avatar and a minor saint? अवतार तो गॉड का ही होगा. तो minor saint भी God ही है ना? But what is the difference? What is the difference between the two of them? माइनर सेंट अभी वहां तक मोक्ष प्राप्ति तक हुए नहीं है. वो थोड़ा एक छोटा सा स्टेप बाकी है. Correct. So they are not fully liberated. Yes. That is the minor difference that is there between an avatar and a saint. Now I put a picture here of the ocean. Okay. Sorry, ma'am. Rahul. Sorry, Rahul. I think I disturbed. Sorry. Did I intervene? I'm sorry. No, please tell me, what is the difference? What do you feel? Could it be that the minor saint does not know that he is God, and the avatars know that they are God? I mean, they are in that realm. A minor saint who is helping so many people, he would be possibly. I understand what you're saying, Rahul. Maybe it is he feels he's doing God's work. He is not possibly fully realized that he is God. He feels मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ. You know, God has sent me here to do some work, so I am doing His work. But I am God, that I am the divine power. Maybe that realization hasn't yet set into this saint. Okay, so ma'am, basically he thinks he's a channel. He's a channel. He's a channel. The source. Yeah. He's a channel, yeah, but he's correct. Absolutely. So this can be a minor difference between a saint and possibly a avatar. Anything else that comes to your mind? Ma'am, could I share what I feel? Please go ahead. Yeah. Ma'am, I feel avatar is sent from above with different purpose to awaken the mass
And minor saint is somebody very common, just like us, with a person with the blood and flesh, and he is on different journey, even though he has done like lot of heaps of sins and all. But when the thing is like lighten up in his inside, then he moves towards that in the sadhana to merge with the ultimate truth. I think that is minor saint. Just like the decorate Ratnakar becomes Balmiki later. So maybe he's not avatar, like, but he was like common people, and he was like I mean, bodied down with his mundane work and his like living thing. Maybe he has incurred a lot of sin, but when he understood the truth, it's like the willingness or the eagerness to merge with the, just like the small streamlet that merge with the bigger river to meet the ocean. Very nice, Momita. I love the example. All of you have given some deep insights into the difference between a minor saint and a avatar. Absolutely right, Momita, Rahul, you are all thinking the right way. So there is a slight difference, right? And like Momita, you rightly said, that person is doing good work, but that little bit is still left. That little realization is still left, But for the Avtara, they are not in the physical body. A minor saint is still attached to the Annamaya Kosha. He's still attached to the physical world. He's still attached to the physical body. But a Avtara is actually not attached to he's not a physical being. He looks physical, but he is not physical. A minor saint looks physical and could be physical. He could enjoy good food. He could enjoy many things. There could be a little bit of lalsa in that saint. Little bit of attachment could be there. But for a avatar, there is no attachment. There is no moha that is now there for this person. Yes, Rahul, go on. Minor saint is basically doing things, whereas the avatar is manifesting. Correct. That's a very good way of putting it. The minor saint is still doing. His still bhav is actually karta bhav. He's still doing things, But the avatar just snaps his fingers and things get done. So I think this is a major difference. Also, ma'am, one point that, ma'am, the accounts of our karmas, punya and pap, this is also to be done by the avatar or the god only. I mean, minor saints do not have that, power. Correct. Absolutely, Ashna. Avatar can, like Shakuntala spoke about, like if there is somebody who's doing a sinful act in a moment, that person can be turned around, like the example she gave of Angulimal. That can only be done by avatar. A minor saint cannot do something like this, right? So now we have got some clarity that there are avatars and there are minor saints. There is a difference between these two souls who are, one is fully liberated, one is partially liberated. Okay. Then let's go to the next question. Sorry, Trupti ma'am, I have a question here. Sorry. Babita, bolo. Yeah, ma'am. So aren't we all minor saints in our own right to some degree, because we are, getting there? We are not yet minor saints, because we are still very attached to the material world. My children, my husband, my mother, my health, my friends, my students, right? We are still in this give and take world, Babita. अभी भी हम इस गिव एंड टेक वर्ल्ड में है ना? तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूं, right? We still celebrate birthdays and we say, what is the kind of return gift that my child has got? Let me see. Okay. So we are still looking at results. So we are still not even minor saints. We are still ground in this material world, right? We still are not realizing that we can't snap our fingers and change things, right? And nor can we possibly
leave our homes or even sit at home and let us say, help maybe hundreds and thousands of people. We still haven't reached there, but we are thinking about it, Babita. The fact that we are thinking about it itself will move us forward. Some people don't think at all. What is this nonsense? There is no need to be a saint. Enjoy, have a great life. Okay. Then there are some people like us who are still thinking about it, who are reading, who are talking, who are kind of debating, who are trying to understand. Then there are some others, who are actually doing a lot of work with people. Like I would say the example of this man who was given the kind of Nobel Prize, and he runs a school for the underprivileged. So he's doing much more, isn't it? He's doing a lot more selfless work. He could be like a saint in his field. Yeah. And so there are so many grades, even for minor saints. It's not that every saint needs to go into the Himalayas and do work. Yes? Satyarthi is doing work, saying he's married right there in the middle of his, kind of all the duties that he's doing as a kind of sansarik, but he's doing some great work. So there are saints in every profession. Every profession you'll have some saints. Like in the field of like a doctor, there are doctors who are saints. Like I would say, Devi Shetty, I would think of him as a saint, right? The kind of work that he's doing down south. So in every profession, you will have these minor saints who are trying to better their profession, who are trying to make a difference in their profession. Correct? And those minor saints can also be of different grades. They need not all be of the same kind. Correct? So there is definitely a difference between minor saint and us. Yes. And there is definitely a difference between minor saint and avatar. Okay. Now, so ma'am, I just have one question, ma'am, कि minor saints जो अपने को portray करते, क्या वो कभी गलत कर सकते हैं अपने disciple के साथ? तो अगर वो करते हैं तो what are they? Are they called minor saints or a regular person? It's like this, like I said, no, that the saint की भी qualities होगी ना. जी. जरूरी नहीं कि all minor saints can be clubbed together. हर saint के quality होगी. So there is a positive, because I said no, the minor saint is connected to the anna, to the body. Correct. So because he is connected to the body still, he can make errors. He can make errors. Right? Because he's still connected to the world, he's still connected to the body. He could have some unfulfilled vasanas. It can be possible. So should we? That is why the disciple. No, see, that is why the disciple should always listen to what the saint is talking. हो सकता है the saint is sometimes उसके gestures are not in coordination with the words. ऐसा हो सकता है ना. Gesture कुछ है, posture कुछ है, और शब्द कुछ और है. So as a disciple, as a student, you have to be very aware, not blind. You don't have to be superstitious. You don't have to be a blind follower. Correct? Arjuna was not a blind follower. Was he a blind follower? No, na? He asked so many questions. He asked Krishna so many questions. Even after Krishna showed his Swarupa to Arjuna, he still had questions about the Swarupa. Right? Not that Krishna stopped asking questions. He kept asking questions. So as a disciple, what is your duty? As a disciple, your duty is to ask questions till the teacher is exhausted. Correct? And if that exhausted teacher still continues answering your questions, then he possibly is a good teacher. Right? Yes. But if the teacher gets exhausted, stop it. Chup raho. Right? Then you know that, oh, all my questions are not being answered, and then the disciple goes somewhere else. But
the disciple also needs to be थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए ना disciple में भी, ठीक है ना? So a disciple should not make a quick opinion of the teacher, a quick judgment of the teacher also. You should stay there, study, learn, see what he is getting from the teacher. Don't expect the teacher to behave like God. The problem with many of these saints and disciples is the disciple takes the saint as a avatar and expects the saint to now make all changes in his life, not realizing the difference between a saint and an avatar. Avatar, right. Because we don't understand the difference, that is the reason we make errors and we possibly make less of the saint. Arey, ye koi saint thodi hai. He can't walk on water, so he's not a saint. But he's a saint, he's not an avatar. है ना? और ऐसे भी कई लोग हैं जो सिद्धियां करते हैं. They are not actually avatar. They are these saints and they do a lot of siddhis for some reason. Either they want name, fame, followers, right? So they may be doing these kind of siddhis. But ऐसे ही disciples उनके पास जाएंगे, right? The teacher is as good as the disciple and the disciple is as good as the teacher. They are made for each other. Arjuna was good, so Krishna became his teacher. Correct? So if you want Krishna as your teacher, you become Arjuna. Then you will get Krishna, no? But if you are not Arjuna and you are, let's say, something else, you are like Bhima, because Bhima did not see Krishna. Krishna's Swarupa was not shown to Bhima. Class 4 student. So the thing is, we have to understand that what kind of student am I? I am Arjuna, then Krishna will be your guru. But if you are not Arjuna, if you're not asking any questions and you're blindly following somebody, and then you get cheated, like Apurva was asking, well, you're getting cheated because you are not asking questions. You feel scared, you feel embarrassed, you feel fearful. Yeah, Arjuna was not fearful of Krishna. He said, you are my sakha, you're my friend. I can ask you anything. And Krishna said, ask me whatever you want. He patiently answered all his questions. See, from the first 4 chapters, especially from the first chapter itself, we understand what a disciple should be. Right? Moment you understand who you should be and you walk on that path of what you should be, you will attract the right teacher. Correct? So disciple should not be scared, fearful, upset, blind. Just because somebody said, "Oh, this is a very great guru, so I'm also going to go there." You don't have to be a follower. You must ask questions, and pertinent questions you must ask, interesting questions you must ask. You must ask questions after reading, not just ask questions. Correct? जैसे क्लास में होते हैं ना बच्चे मिस करते रहते हैं, है ना? But then when the miss says, "Come on, stand up. What is your question?" He says, "No, ma'am, I don't have a question." So we don't have to be that kind of student. मैम क्वेश्चन पूछने के बाद डांट पड़ जाती थी, क्या करेगी जान के, ये बोल दिया था. What will you do? मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपने कुंडलनी जागृत पे एक चैप्टर पढ़ाया है, आप बताओ सच में कुंडलनी जागृत कैसे होती है. तो कहते हैं क्या करेगी जान के, क्या फायदा है. And then I studied Nadi Shodhan helps in Kundalini awakening later on in one of the Upanishads. इतना simple सा आंसर नहीं दिया मेरे को. Correct. Because there are these saints. I'm not, like I said, saints are various qualities. Okay, there could be a saint who looks like a saint, who dresses like a saint, who speaks like a saint, but internally is not like a saint. How will you ever come to know this? Till you become, you have that vision to see the teacher correctly.
So it's very important that as a disciple, as a student of the spiritual knowledge, we all read, discuss, understand, because that is the path that we should take. We will find somebody then who will answer all our questions. Correct? So I think everybody understood about saints, avatars, and of course, mortal human beings like us. So look at the next question, if you all can read it. Think of, I love this because how will the wave become one with the ocean? We all want to become one with the divine, correct? The ocean is the divine and we are like this wave. हम एक छोटी सी लहर है, ठीक है? ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. How are we going to become one with the ocean? Can anybody tell me in one word, how will you become one with the ocean? Surrender. Surrender. Surrender, very good. What else? Faith. Ma'am, surrender and Selfless service. Okay, selfless service, surrender. Purna Sharanagati. Any Sharanagati. I go into my shelter. Yeah. What ma'am, else? surrender and by not thinking how. Not to think how. Faith is Elizabeth says faith. Yes, faith is also one way that the wave will become an ocean. Indra says awareness. Yes, with awareness, the wave can become an ocean. Realize wave. Yeah, go on, Rahul. Realize that he's it's the ocean. Realize that Trusting. you are the ocean. Trusting. Correct. Very good. Excellent. Belief. So all Belief. Belief. Yeah. Break the belief that you are not the ocean, that you are a wave. Yeah. You are not the wave, you are the ocean. Like Rahul said, you have to actually realize that you are actually the ocean, right? So the one word that comes to me when I read the chapter is dissolve. Yeah, when you dissolve, Samajana. Samahit. Samajana, correct. When you become how will you become that? You'll become that when you dissolve, right? When you are no longer there, then you dissolve and you become the ocean, right? Everything is, because when you talk about surrender, you are still surrendering, you are still there to surrender. Yes. When you trust, you say, oh, I have to trust. Yeah. But when I dissolve, when I melt and become that, then there is, I do not exist any longer, right? I become that ocean, right? So we all have to understand this. जब मैं और मेरापन और मेरी ईगो डिसॉल्व, सब कुछ डिसॉल्व ही हो जाए. When I no longer, when I am that, I am that, this and that, this and that, then there is no this, right? So this is one thing that's mentioned in this word. When we become the seer, then the doer, is it also close to becoming the seer, like the one who sees, then doing? Yes, when you are no longer the seer and no longer the doer, when you are nothing. That is why Osho said nothingness. No, actually, what he meant was you dissolve into that. Like think of the ocean. The wave comes up and then the wave goes back into the ocean and becomes the ocean. But then it does not understand how to stay in the ocean. So it again becomes a wave. And we are all doing that, right? We are not yet comfortable becoming the ocean. It's very easy to say, "Mujhe moksha chahiye," hai na? But are we comfortable being the ocean? No. Maybe we are not comfortable being the ocean, because when we become the ocean, then we will not be there. I will not be there. I will not exist. We'll have to my identity will be lost. I will not be. The capital I, self will not be there. And then I will have certain other duties, because as we already know that Krishna said he's going to age after age come again. So when I become the ocean has a very important duty. Can you tell me what is the duty of the ocean? सबको अपने अंदर समा लेना, हर चीज को. बुरा अच्छा सब कुछ मेरा.
the ocean also has a duty. It takes everything. The kuda, kachra, everything is taken. Are we ready for that? Are we ready to become an ocean who is going to get everybody's sin? Am I ready to absorb the sins of the world? Because like Jesus, yeah, he was crucified on the cross. Why? And he says also, that he took everybody's evil doers, and that is how he was crucified on the cross, right? So the thing is, are we ready for that? अगर कोई हमारे घर में कचरे का डब्बा छोड़ जाए तो हमको तो दिक्कत आ जाएगी, right? So it is very, see, we have to understand this, that are we ready? क्या हम तैयार है इस चीज ओशन बनने के लिए? हम तैयार है? तो ये क्वेश्चन आपको खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा. हमें तो बिल्कुल Am I ready to become the ocean? रिफाइंड वाटर चाहिए, फिल्टर्ड रिफाइंड. हमें तो बॉटल्ड रिफाइंड वाटर चाहिए, वहां पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसा, है ना? तो ओशन, आई एम अ वेव, आई एम ओके, and I will dissolve in the ocean. I am okay with that also. But when I become the ocean, It's difficult. am I okay with becoming the ocean? That is the question we have to ask ourselves. That is exactly the 7th and 8th verse जो है ना, ये बहुत सुंदर. It holds a lot of truth, this verse. Okay, let's ask the next question. When does the Lord incarnate? When does the Lord incarnate? जब अधर्म की स्थापना. Correct. जब अधर्म बढ़ता जाएगा और धर्म की स्थापना. Right. Correct. So when the evil rise and the पाप पुण्य का जो स्केल है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है and पाप जो है वो बढ़ता जाता है, then the Lord says, I will have to incarnate because I have to make this back to normal. Because I want this drama. I enjoy this drama. Yeah. अब ये ड्रामा थोड़ा वो हो रहा है, बहुत ही खराब हो रहा है ना. I'm not interested in seeing a horror show, God says. ये horror show नहीं देखना है मुझे. I want like some mystery. So he says, let me come and let me just settle these people so that I can continue this drama. So God comes, the avatar only comes when there is adharma in this world. How is the evil doer destroyed? अब वो evil doer को destroy कैसे करेंगे? शकुंतला जी ने एक example already दे दिया है, अंगुलीमाल का. But anybody else can tell me how is the evil doer going to be destroyed? Ma'am, when they dissolve with the ocean. वो तो कैसे होएगा? अभी तो evil In your words. अभी ये तुम्हारे दिमाग में चला गया है. It's in your head. But how else do you think? How do these avatars, destroy the evil one? कैसे करते हैं ये लोग? By the pureness, example शकुंतला ने दिया. उनको realize करवा के. By their purity. तो they're extremely pure by their goodness. By their act. By their act. Okay. What else? So there will be various kind of stages, है ना? सबके लिए एक ही रूल नहीं होगा. हर evil person के लिए different rules होंगे, right? किसी के लिए जेल है तो किसी के लिए kind of time out है ना? तो आपके हिसाब से evil doers को अवतार या saints, अच्छे saints है, वो कैसे उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं? आप बताइए. Let's have some different ways in which they must be doing things. किसी को तो मारना भी पड़ता है, तो मारते भी हैं. हाँ, किसी को मारना भी पड़ेगा. रावण का वध किया. वो मारना भी मैम, आई थिंक उनकी मोक्ष प्राप्ति या उनका किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है. जो भगवान से मरेगा तो मोक्ष मिल ही जाएगा. Like a mirror. Like a mirror. Yeah. Can you say more, Rahul, about it? No, just explain karo. Be like a mirror that the person will be able to see his own reflection. Correct. Act like a mirror. Be like a mirror. Say the saint will say something,
that will actually hit the person the right chords. Sometimes these people say one or two things, which actually hit you really deeply. तो ये भी कई लोग Ma'am, करते हैं. some saints like Sai Baba, Sai Baba used to take pariksha of such people and put them in the same situation जो वो अपने victims के साथ करते थे. किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो बाबा उनको same situation में डाल के, अगर वो किसी के बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो उन्हीं के बच्चे के लिए एक situation ले आते थे कि अब तुम क्या करोगे, and then they used to surrender and ask for forgiveness. और तब उन्हें समझ आता था. बाबा का जैसा एक वो एग्जाम्पल है ना, ऑफ दैट माँ का एक बच्चा है और वो कहती है कि दिस इज माय चाइल्ड, एंड देन ही सेज कट द चाइल्ड इनटू टू, राइट, and then the other woman realizes, oh my god, how can I do that, right? So sometimes by example, sometimes by acts, sometimes by kindness, when somebody is, when the saint is very kind and very giving, a person who is not that giving may say, I want to be like this, I want to be like this saint, I also want to be very giving. So sometimes the saint's pious qualities can instigate even a person who is greedy or angry to change, because they want to become like that, they want to become calm and peaceful. अरे गुरुजी आपके चेहरे के ऊपर कितनी शांति है, मुझे भी वो शांति चाहिए. And the Guruji says, हाँ बेटा, अब तुम ऐसे ऐसे करो, तुम भी शांत हो जाओगे. And then that person starts working on himself, right? I also want to become as shant as Guruji. So the Guru or the saint needs to exhibit those qualities. You have qualities and you have to exhibit the qualities, right? So when the saint starts exhibiting these beautiful qualities, their disciples want those qualities, and that itself can make the person move out of the kleshas. You know all the kleshas, right? Moha, Lobha, then Matsarya, then Abhinivesh, Abhinivesh, Krodh, Alasya. So all these are kleshas which are going to keep us bound in this physical body. But the saint is exhibiting opposite of these qualities. And the disciples, some disciples maybe, will want those qualities and they'll start changing. So a man very angry will become very quiet. A man very attached will then become detached, right? So sin is not always killing somebody, murdering somebody, okay? These are also sins. ये क्लेशास भी sins ही है हमारे लिए, ठीक है ना? तो वो saint जब ये exhibit करता है, तो आपको लगता है कि मुझे ये करना है. And then he starts changing, right? So the evil doer gets destroyed like this. Evil doer को destroy नहीं करना है, evil qualities को destroy करना है ना? Yeah. Ma'am, the very first step has to be taken by evil doer. He should agree and be receptive. Otherwise, like, no saint or guru can't do anything. He should be like ready to change and accept. Yeah. And but he should be receptive. The time of readiness is different for different people. Yes, ma'am. True. It is not necessary that I want this person to be ready, so he should be ready. ऐसा नहीं होता है ना? His time or her time has not come, कहते हैं ना? So the time of readiness has not come. That is why the saint will tell you that, okay, you want your son to give up alcohol. All right. ऐसे करो. Go and sit with him. Go and say nice things to him. Cook some nice food for him. Go out with him. What you are not doing, the wife comes to a saint and the wife says, मेरा husband बहुत पीता है, मैंने तो उससे बात करना बंद कर दिया है, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं, मैं अपने कमरे में बैठे रहती हूँ अपने बच्चों के साथ. So the saint will say, you are doing everything that is not going to help your husband, correct? This actually happens, है ना? Yes. So the wife is doing everything that is not going to help the husband. So what is the saint going to say? Go back, right? Sit with him, chat with him. वो टीवी देख रहे तुम भी जाके 5 मिनट बैठो, उसके लिए खाना बनाओ, talk to him, go for a walk with him, encourage, read something. He is drinking there, you can read something nice to him. Maybe he's listening, not listening,
Doesn't matter. You can say a quote. You can send him a nice WhatsApp message. Send him a heart. There are many of these wives who tell me, "Man, what is the point? Heart भेज भेज के, smiley भेज भेज के, वो तो change ही नहीं होते." भेजते रहो, भेजते रहो. क्या पता? In a moment of sadness, if he gets a heart from you, maybe you will suddenly change. Correct? Because there are moments when you have to catch them. Not every moment you may not catch them, but there will come a moment in this man's life where suddenly he is sad and your heart goes to him and he says, "Wow, my wife still loves me. I think I should go home." Correct? So this is very important. हमें अपनी ड्यूटी से चूकना नहीं है. हमें अपनी ड्यूटी से चूकना नहीं. हमें करते रहना है जो हमें करना है. Right? Whether the person changes today or the person changes after 5 years, doesn't matter. Or the person will not change. But for me, even if suppose if the wife's husband dies, she is sending him hearts and smileys and emojis. The saint has told her to do this. But after 5 years, the husband dies of alcohol. The wife may go back to the saint and say that, "महात्मा जी, आपने मुझे कहा था ये भेजो, पर वो तो चले गए." But आपके अंदर जो परिवर्तन आया है, वो 5 सालों में. Isn't that wonderful? Right? कई बार ये जो संत लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये बंदा ज्यादा देर नहीं जिंदा रहेगा, पर ये लेडी को मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है. This lady has to become very good because she has to look after her children. So let me give her this kind of prasad. And so the Mahatma will give her that kind of prasad. So let us not look at everything linearly, this and that. It's not like that. And ma'am, at times it takes 49 years. Sorry. At times it takes 49 years to say the same thing. Yes. There are so many changes that have happened in people when I see my work, where people who were not confident became confident. Couples who were not. I remember, I'll tell you about a couple. Okay, we're talking about this evilness in people. So I had this lady. She's a doctor who called me up, and she was divorced, and she married then again with a person. He was also divorced, and I had a session with the husband, and the husband said that my wife is not happy with me. And I think I always had this problem. So I said, "What is your problem? Tell me." So he said, "I'm not interested in doing any sexual act." मतलब मुझे वाइफ चाहिए, पर मुझे ये करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में. So I spoke to the wife. The wife said, "He's a wonderful person. He's this, he's that, he's that. But ma'am, this is a problem." So I told her that, "Do you love your husband?" "Yes, I love my husband." I said, "You love everything about your husband?" "Yes, I love everything about my husband." I said, "Then why don't you love this also about your husband?" That he's wonderful, but this is an act that he does not wish to do. So she said, "Ma'am, ये तो होना चाहिए ना." मैंने कहा, "किसने कहा आपको?" मैंने कहा, "आपका एक बच्चा है?" बोले, "हाँ." मैंने कहा, now you want to have sexual intercourse for pleasure, correct? Not for procreation. Procreation is over. जिसके लिए ये आपको दिया गया है, आपको अभी pleasure चाहिए. Can you give up this pleasure and be happy with your husband? So she thought, what am I saying? Then she said, "Ma'am, I think I can do that because he's a wonderful person. If I remove this," I said, "No, don't remove it. Accept it. Accept him and don't expect pleasure. Accept him without expecting pleasure." Is that fine? They are absolutely fine now. The couple is wonderful. They are happy with each other. So the important thing is this attachment, moha, desire, right, was coming out from avidya.
this woman had ignorance about love. प्यार होता क्या है? She had ignorance about love. Moment when I corrected that, she's fine now with it. She's happy. She said, yes, ma'am. Why should I only want this as pleasure? There are so many other pleasurable things that I can get from my husband. I said, absolutely right. So now they are very happy together. They are getting all kinds of pleasures from each other. And she said, ma'am, I'm really happy. I don't know why I was focusing only on that. So the important thing is these are these kleshas or these kind of vices that sometimes overpower us and it affects our kind of relationship. Everybody must listen to me. Why? Why should everybody listen to you? Who are you? No, my child is not listening to me. My husband is not listening to me. No, so chodo, let it be. Right. So these are the various kleshas that we have to work with. The last question is on that, the 8th one. Let's go quickly to the next two. Why does God choose partially or fully liberated beings to incarnate? ईश्वर तुम्हें और मुझे क्यों नहीं चुनते हैं? Why is God choosing partially or fully liberated beings to incarnate? God, the potential, is choosing these people, right? That I will incarnate to Krishna, I will incarnate to Jesus, I will incarnate to someone else. But why is he not choosing us to incarnate in? Why can't we become his let's say kind of vehicle? हम तो अभी इम्प्योर हैं, हम तो गलतियां कर देंगे. जो काम के लिए भेजा गया है, जो कुछ भी हमको गोल दिया है, वो तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे. We are still attached the kind of syllabus he has, the kind of syllabus he has for us, like शकुंतला ने बहुत अच्छा कहा, 4th standard का स्टूडेंट को अगर प्रोफेसर आकर पढ़ाएगा तो वो कैसे पढ़ेगा? He cannot study, right? So the syllabus is too high for us. हम उसको समझ नहीं पाएंगे, ना हम उसको सिखा पाएंगे, राइट? तो वो हमें नहीं चुन सकते, इसीलिए वो पार्शियली जो हुए हैं, उसको कहते हैं खंड अवतार और पूर्ण अवतार. दो किस्म के होते हैं अवतार. एक है पूर्ण अवतार लाइक जीसस, लाइक कृष्णा. एक है खंड अवतार विच इज लाइक सेंट्स. ही विल चूज देम, he cannot choose us. So don't get disheartened. Why is not God choose? Why God is not choosing us? Why we are not the chosen one? Let's work on ourselves. No, let's work on ourselves. Let's work on our kind of relationship. Let's work on our friendship. So that we also quickly climb up the ladder. Okay. When does man seek salvation? ये बहुत interesting question है जो इस chapter से है. When does man seek salvation? कब मुझे salvation चाहिए? When do I want to get out of suffering? Ma'am, when he's totally fed up of the world. और या पूरा हो जाए उसका, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तृप्ति हो जाए उसकी. He gives the awareness. When all the lessons are learned, he becomes aware. पर पता है तुम्हें, शकुना तुमने बहुत अच्छा कहा कि तृप्ति हो जाए, पर इंसान की तृप्ति कभी होती नहीं है. आज ये है, 50 साल की उम्र में कुछ और चाहिए होगा, 60 साल की उम्र में कुछ और चाहिए होगा. He always wants more. He doesn't think like that. कि बस संतोष हो गया है मुझे. बहुत रेयर होता है कि ह्यूमन बीइंग को संतोष प्राप्ति होती है. बट आई थिंक व्हेन यू आर फेड अप ऑफ सफरिंग, मतलब अति हो गई है सफरिंग, दुख निवृत्ति के लिए. दुख निवृत्ति के लिए. एब्सोल्युटली. द दुख becomes beyond your capacity to take. That is when you move to salvation, not before that. सुख प्राप्ति ऐसी चीज है ना कि आपको कुछ ना कुछ मोह में अटैच हो ही जाते हैं आप. बहुत डिफिकल्ट है. When you have everything, it's very difficult to give up everything for nothing. But when you have nothing, it is very easy to move towards salvation. Yes or no?
Ma'am, Lord Buddha, he had everything, but he Lord Buddha was lived. an avatar, beta. See, don't compare Lord Buddha to us. man. That is why I'm trying to tell you that avatar के उसके साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, है ना? तो जो लोग ये कहते कि मैम बुद्धा ने, अरे पर आप बुद्धा नहीं है, आप तो बुद्धा के टो नेल भी नहीं है. How do you compare yourself to Lord Buddha? If you were in Lord Buddha's place, in that palace, your wife had just delivered a baby. Would you have left your home? Think. Would you have left your home? No, right? Clear answer है no. Because you are not Lord Buddha, right? So हमें अपने आप को कभी भी इन महात्माओं इन fully realized soul के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम नहीं है हम वो नहीं कर सकते. सोचो, आप खुद सोचो, हमारा एक छोटा बच्चा है वहां पे, जस्ट बॉर्न चाइल्ड, आर यू गोइंग टू लीव द हाउस and go away? No. Then No. so you cannot compare yourself to Lord Buddha. No, Lord Buddha is an avatar. He's a fully realized master who came for a greater world mission. हम तो अपने ही मिशन में अटके हुए हैं. वर्ल्ड मिशन कहाँ है हमारे पास? So we should, there are many people who compare themselves. Oh, ma'am, Christ. You are not Christ. You are not Krishna. You are not Buddha. You are not even Yogananda. So how do you compare yourself to them? Right? You cannot. We are Arjunas. We can compare ourselves to Arjuna. Okay? That we are prepared to listen. We are prepared to learn. We are prepared to ask questions. तो हम अपने आप को अर्जुना समझ सकते हैं, पर हम अपने आप को कृष्ण नहीं समझ सकते. So it is important to understand that दुख निवृत्ति, like राहुल rightly said, कि जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तब हम salvation की कामना कर सकते हैं. We can move towards salvation. पर जब हमारे पास सब कुछ है ना, pleasure, सब कुछ है हमारे पास, तो थोड़ा मुश्किल रहता है to give up everything for nothing, or to stay in everything and wish for nothing. ये थोड़ा बहुत हो, this can still happen, correct? We have everything but we wish that we should be peaceful, but we wish for something, right? कि हमें ये चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें ये, हम फिर भी desire से जुड़े हुए हैं. We are not dissolving. Are we able to dissolve, or are we still in that thing of I want this? Let us say, while having everything, you are enjoying everything, but you are not attached to anything. This can happen. ये हम उम्मीद कर सकते हैं अपने से, कि हम enjoy करें सब कुछ, पर हम किसी से attach न हो. अगर कल मेड नहीं आए तो हम गुस्सा न हो, right? कल मुझे दाल रोटी ही मिले तो मुझे सब्जी की कामना न हो. अगर मैं बाहर निकलूं और छाता न हो और बारिश हो तो आई वोंट कर्स द रेन. ये हम उम्मीद कर सकते हैं अपने आप. एम आई राइट? कैन वी डू दिस? है ना? तो ये दुख जो छोटे छोटे दुख जो हम समझते हैं दुख है, कैन वी जस्ट लेट गो ऑफ दैट? देन मे बी हैविंग एवरीथिंग वी विल बी ओके विथ नथिंग. So this is really how man can seek salvation. Human mind, physical mind जो हमारा है, पहले तो इससे हमें मुक्ति चाहिए ना. कल खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, person will say I don't fast. मैं फास्ट नहीं कर सकता, मुझे तो खाना चाहिए. फिनिश्ड. कहाँ से दुख निवृत्ति की तरफ आप जाने वाले? आप कर ही नहीं रहे कुछ भी. You're not able to give up even a simple meal. So you have to understand this, okay? So that is very important. This particular verse is very beautiful. अगर हम उसको अच्छी तरह से समझे तो, okay? And what are the emotions which lead to demerits? So हमने already बोल दिया है, क्लेशास. We have one last slide. We will just finish 7 and 8 words today. So let's look at the next slide. Yeah. तो ये हमारा मन है. सोचो, ये पानी के अंदर जो मून दिखता है ना, ये जो पॉट है, pot is like
our body. और जो पानी है वो हमारा माइंड है, ओके? और हमारा माइंड जो है वो डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब्ड या डिस्क्रिमिनेटिव, ये 3 ऑप्शंस आपके माइंड के पास है। एक है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड माइंड, उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। या डिस्टर्ब्ड माइंड, एजिटेटेड, गुस्सा आ जाता है मन में। या फिर डिस्क्रिमिनेटिव माइंड, आपका माइंड कैसा है, सच और झूठ, गुड और बैड, इसमें फर्क करता है वो या नहीं, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसमें फर्क करता है वो, शायद नहीं। तो हमारा मन, पहले तो हमारा ये सब whatever to reach that stage, we'll have to deal with our mind. Is our mind distorted, disturbed, or discriminated? Is it able to reflect the divine clearly, or is the image shaken? जैसे अपूर्व ने राइटली कहा कि उसका इमेज जो उसके गुरु थे, उसका इमेज शेक हो गया उसके माइंड में, माइंड क्लियर नहीं है, राइट? तो क्या हम उस डिवाइन फोर्स को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं अपने मन में? लॉयल्टी, लव, कंपैशन, टॉलरेंस, पेशेंस, एक्सेप्टेंस, क्या इन क्वालिटीज को हम रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं? पहले हमें वो क्वेश्चन पूछना है, ओके? बिकॉज एक दिन ये घड़ा टूटेगा, एक दिन ये घड़ा टूटेगा and the wave will become a ocean. But if it is uncomfortable with the ocean, it will become a wave again. Okay? So, शकुंतला जी ने जैसे कहा कि I found my guru, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये ना हो कि हम अपने गुरु, कोई भी अपने गुरु, टीचर, सेंट, जिसको भी हम फॉलो करते हैं, हम ये कहे कि ये बेस्ट, इससे बेटर तो कोई हो नहीं, राइट? Because then again we are acting from a space of ignorance, okay? Because we don't want to get attached to A, B, or C saints, right? We want to become the ocean, okay? So we can stop the slideshow, and any questions you want to ask me. I took a little, थोड़ा 7-8 वर्ड्स को मैंने थोड़ा अच्छी तरह से elaborately समझा और मैंने explain किया. So any questions you have, or you feel you can, now you've understood that you all have to become the ocean and not be happy with being a wave, correct? Yes or no? क्वेश्चन तो बनना ही है, क्वेश्चन तो बनना ही है ना? तो हमारे पास बचपन से अब तक बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, जैसे तुमने राइटली कहा शकुंतला, देयर इज समथिंग कॉल्ड शिक्षक. एक शिक्षक होता है जो हमें स्कूल में ज्ञान देता है, और एक गुरु होता है जो हमें विद्या देता है. इसमें डिफरेंस है ना? ज्ञान बहुत लोग देते हैं हमें, है ना? हस्बैंड भी हमें ज्ञान देता है, वाइफ भी ज्ञान देती है हस्बैंड को, बट एक होता है विद्या, सेल्फ नॉलेज. सेल्फ नॉलेज इज मच बेटर, और ये हमें लोगों से सीखना चाहिए, एंड खुद से सीखना चाहिए, खुद के एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना ज्यादा जरूरी है. तो this is what I wanted to say about verse 7 and 8. Any questions anybody has? Minor saint, avatar, हम कैसे बनेंगे माइनर सेंट, ये सब क्वेश्चंस है. तो नॉट अबाउट द सेंट, बट आपने बोला कि जब दुखों का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत, तो ही सैल्वेशन की तरफ जाएंगे. मतलब हमें वो मतलब चटनी की तरफ पिसना पड़ेगा, पूरी तरह सफरिंग पे जाना पड़ेगा तब. दुख का मतलब ये नहीं कि हर तरफ से दुख आए. It can be a health issue. Let us say somebody is grappling with a health issue. Everything else is fine. तो खाना मिल रहा है, everybody is taking care, सुख है उसके पास, but उसकी body is giving this person trouble. So do you think this person will seek how to get rid or get out of the suffering? Correct?
So that can also become a mark towards salvation. It can be any kind of suffering, right? Let us say somebody is drinking alcohol. Let's take the example of alcohol only, okay? And he's drinking, everybody's unhappy, but he's happy. दुख दूसरों को दिया जा रहा है, but he doesn't realize that he too is suffering. And then one day, the doctor tells him, you're going to die in 3 months. And he does not want to die. He wants to drink more. He's enjoying this pleasure. And then he starts suffering. ऐसे कितने लोग हैं who okay, there are so many people who've given up alcohol, who've given up smoking, who've given up bad ways, gambling, right? In that moment of realization that this is suffering. And they've moved steps ahead in their life. So, कोई ना कोई दुख देखो, दुख जरूरी है. Little bit of pain is important. It kind of gets you to think about your body, about your mind, about yourself, about your relationships, right? So don't think of suffering as pahad. Think of suffering as suffering, you know. And then how does it motivate you? दुख निवृत्ति कब होगी? जब आप मोटिवेट होंगे, तभी तो salvation आएगा ना. Without motivation तो वो हो नहीं सकता. So think of every suffering that you have as a way, as a stepping stone towards salvation. Then you'll find answers. You'll get motivated to get out. Thank you. Ma'am, I want to share something. 7 महीना पहले मेरी बेटी का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था. तो ऑफ कोर्स स्पाइन का था तो इट वाज अंडर स्पेशल केयर. मुझे बहुत ज्यादा उसका केयर लेना पड़ता था क्योंकि उसके अप एंड डाउन्स भी होते थे, अच्छी हो रही है, खराब हो रही है. सिंस 1 वीक पता नहीं मुझे क्या एक फीलिंग आ रहा है अंदर में कि आई एम नॉट अ मॉम, आई एम एन एंजल. Lovely. And I can keep telling her, Mini, I am not your mom, I am your angel. So I don't know why this feeling is suddenly coming in my mind. What's that? What are the changes? क्या ये सेवा भाव से हुआ है? ये क्या हुआ है? उमा जी जैसे भी हुआ है. उमा जी जैसे भी हुआ है. Now it's okay. It's okay, right? It is happening to you, and you are, see, you have been following spirituality for quite some time now, है ना? And you are under the care of a guru, right? So इतना ज्यादा आपने उनको सुना, उनकी बातें सुनी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है. So now you are also feeling कि वो qualities जो मेरे गुरु में है मेरे अंदर आ रही है. Okay. Right? So वो qualities आप imbibe कर रहे हैं. So now you are giving it to your daughter. Beautiful, very nice. Okay. Yeah, good. So आज मुझे मौका मिला तो मैं सोची पूछ लेती हूँ क्यों मेरे मन में. Very nice. You are getting qualities. It's like this, you know. कई बार ऐसे होता है कि when you sit next to a guru, you don't have to ask a question. The guru already knows what you need. कई बार उनके स्पेस में बैठ के into his, you know, उनका जो कहना प्रकाश होता है, उनके अंदर जब आप बैठते हैं तो आपके भीतर भी वो क्वालिटीज धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो जाती है. That is what is happening. And that is wonderful. So take it, give it to your daughter. Okay. Right? Become a guru to your daughter now. Okay. Okay. Thank you. Okay, then thank you everybody. It was wonderful. And keep reading the Bhagavad Gita, and we'll continue with our discourses, Shakuntala and me. And thank you for giving us the opportunity, because it helps us to read, it helps us to reflect, and then it helps us to talk to you all. Thank you. Thank you, ma'am, Thank for you, the ma'am. session. Thank you.